तब जैसे आपने बोला मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का ना, वो फैमिली वाला पार्ट नहीं हो पाता है। ओके। उसका जो डिटेल पार्ट है, रूट स्टेम वगैरह लीव्स वगैरह वो कर लेते हैं। उसका जो नेम है, एग्जांपल्स याद करने का आता है, उसमें फिर प्रॉब्लम आता है कि लीव्स का किसमें था, स्टेम का किसमें था, तो वो चीज ना बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और फैमिली वाला पार्ट मतलब कैसे करे उसको एक प्रॉपर तरीके से वो बता देते हैं। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट नीट एग्जाम, राइट? तो नीट एग्जाम में अक्सरियत में दे विल आस्क यू की फीचर्स, की पॉइंट्स ऑफ अ फैमिली। वो कहते हैं ना, तेरी अदा सबसे जुदा। तो हर फैमिली की एक अदा है, एक कैरेक्टर है विच इज यूनिक इन दैम। तो ये उन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट हम्म विद द फैमिलीज। सोलर एसी फैमिली है, फैब एसी फैमिली है। अच्छा, विल स्टार्ट विद सोलर एसी फर्स्ट एंड देन गो टू फैब एसी। ओके, सोलर एसी के की कैरेक्टर्स क्या है? इफ यू चेक आउट टेक्स्ट बुक, you see that calyx part में, what is calyx? outermost layer of the flower, right? इस वाले हिस्से में what we observe is there is persistent calyx. What do you mean by this persistent? बोले तो क्या, जो रह जाता है, the one which will never leave, उसको कहते हैं persistent. मिसाल के तौर पर सोलनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं ब्रिंजॉल, चिल्ली। अगर मैं चिल्ली ड्रॉ करूं यहाँ पे, I see that on chilli there is one layer which is attached like this, right? What is this layer? This is that calyx. Usually calyx गिर जाता है after flower develops into fruit, but in case of chilli it is still attaching. Similarly, even in brinjal, okay, the so-called fruit has developed, but the calyx is still attached to it. ये सबसे पहला की कैरेक्टर जो अपने सोलोनेसी फैमिली में है, that is persistent calyx. Okay, then second character अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो it is actually there in gynation. Gynation is female part. तो क्या कैरेक्टर बताया जा रहा है यहाँ पे? You have bicarpellary syncarpus ovary, ठीक है, which is superior in nature. Superior is hypogynous ovary. Okay, these three characters are to be added along with it. अब अगर फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें गाइस, अगर नीट में क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम दिस फैमिली, की कैरेक्टर पर बात होगी, एंड की कैरेक्टर इज ओनली वन व्हिच इज बीइंग गिवन इन योर सिलेबस। अगर सिलेबस से थोड़ा हटे तो की कैरेक्टर इज पोरस एंथर, एंथर के ऊपर पोर्स रहते हैं, एंड देन गैमोपेटलस कंडीशन तो टेक्स्ट बुक में भी स्पेसिफाई हुआ है, बट दैट इज नॉट अ की कैरेक्टर। तो की कैरेक्टर इज ओनली वन, आप इसको याद रखें इन सोलनेसी। सेकेंड कैरेक्टर गाइनेशन से बात करिए तो बाइकार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी। बाइकार्पलरी इज लाइक टू कार्पल्स आर देयर एंड बोथ ऑफ देम आर यूनाइटेड, सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी में मौजूद है। फ्रूट इज ईदर अ बेरी और अ कैप्सूल। पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपको नीट में, बेरी वाला फ्रूट कौन सा है? which fruit is actually berry? It is tomato, brinjal, all these are berries. Whereas कैप्सूल की बात करो तो ड्राई जो नेचर आता है ना, that is capsicum. साइंटिफिक नेम ऑफ चिल्ली इज कैप्सिकम। कैप्सिकम का जीनस नेम भी कैप्सिकम है, चिल्ली का जीनस नेम भी कैप्सिकम है। तो these three will be key points according to me which will be asked in NEET exam. सेकेंड थिंग जिसमें आपको दिक्कत देंगे नीट वाले इज फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करो, दिस पर्टिकुलर फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर and it is bisexual, दोनों सेक्सेस हैं, फीमेल एज वेल एज मेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन देम। इसके अलावा केलिक्स को रिप्रेजेंट करना है K5 which is fused, then corolla 5 which is fused, then comes androecium, 5 stamens are there and they are epipetalous, petal के ऊपर। if this is the petal, on petal you see anthers attached like this। इस कंडीशन को बुलाते हैं आप एपीपेटलस which is actually there on page number 76, ठीक है। then followed by this gynation की बात करो, it is bicarpellary syncarpus superior ovary। क्या चीज से इसको याद करें when compared to other families? everything is in multiples of 5, 5 5 5। अगर ये आपको मिले in floral formula then consider that to be a solanaceae family, ठीक है। hopefully this is easy for you। then we'll talk about next family, fabaceae।
गाइस मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मेक अ नोट ऑफ इट, ओके, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए क्लास के बाद जब नोट्स उठाएं तो थिंग्स विल बिकम रियली इजी. Fabaceae, see, Solanaceae is commonly known as vegetable family. Maximum vegetables belongs to this. Fabaceae is pulses वाला family, दाल, जितने दाल आप लोग खा रहे हैं, all dals belong to Fabaceae family. ठीक है. अब Fabaceae का की कैरेक्टर क्या है? यहां पे सबसे पहला की कैरेक्टर लीफ में पाया जाएगा. That is, you have pinnately compound leaf. ठीक है. You have pinnately compound leaf. Secondly, you have pulvinous leaf base. So pinnately compound leaf and pulvinous leaf base. What is pulvinous leaf base? In middle of the lines, they have given that this is swollen leaf base being found in leguminaceae members. Okay? Swollen leaf base is pulvinous leaf base. And then you have pinnately compound leaf, a leaf which is divided into smaller pinnas. Okay? तो यहाँ पे पहला की कैरेक्टर लीफ में आएगा. सेकेंड की कैरेक्टर, कैन वी सी एनी कैरेक्टर इन के लीक्स? नहीं. कैन वी सी एनी कैरेक्टर इन करोला? यस, देयर इज अ की कैरेक्टर इन करोला. That is, they have papillionous estivation, जिसे हम लोग vexillary estivation भी बुलाते हैं. Vexillary estivation. Guys, what is vexillary estivation? Condition जहां पे you have a large sanded petal. एक ऐसा petal plant में है which is showy, which is expressing itself. इसके अंदर में we have two wing petals like this. And then within that you have two keel petals who are united together. You know, ग्रीक में कील किसको बुलाया जाता है? घर में अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी हो तो यूजुअली अम्मा जी की साड़ी उठाते हैं, सीलिंग से हैंग करके उस बच्चे को उसमें डाल दिया जाता है. उसको हम लोग झोली कहते हैं यहाँ पर बेंगलोर में. आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन नॉर्थ इंडिया एंड अदर व्हाट इज से रीजंस. वो झोली जैसा एक कैविटी या झोली जैसा एक लेयर बनाता है within which you will actually have all androecium and gynoecium being set. So vexillary estivation का मौजूद होना is a key character. Guys, among these two character, this is very important for us. बहुत ही ज्यादा important character. ठीक है. So first one is the leaf वाला character, second one is corolla. Corolla के बाद आप बात करो androecium में. Again there is a key character. Guys, एंड्रेशियम का पार्ट जहां पर चैप्टर में है, दे टॉक अबाउट डायडेल्फिस कंडीशन. व्हाट इज डायडेल्फिस कंडीशन? एक एंथर सेपरेट है एंड 9 एंथर्स आर टुगेदर. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 of them are together and one is free. This condition where you have 9 plus 1, 9 united and one is free, is again a key character which is known as diadelphus. Diadelphus, इसको भी मैं बॉक्स में डालता हूं because this is again a key character, very unique, very uniquely been found only in Fabaceae. तेरी अदा सबसे जुदा. ठीक है. Followed by this, gynoecium की बात करो, again there is a key character over here. What is that key character? I call it as trium. What is trium? Monocarpellary, monolocular, marginal placentation. मॉर्फोलॉजी में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है अबाउट बाय हार्टिंग द कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली. तो आई नीड योर फुल अटेंशन. ओके. मोनोकार्पलरी, मोनोलॉक्युलर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन. आई हैव नॉट पुट दिस अंडर बॉक्स बिकॉज़ मेन फैमिली लेग्यूमिनेसी का कैरेक्टर है. दिस इज pulvinous leaf base plus having pinnately compound leaf as well as anthrium. It is also a character of subfamily, could be asked in NEET exam. Leguminaceae में भी सेम कैरेक्टर है, मेन फैमिली. इसके अंदर 3 सब फैमिलीज आते हैं, Fabaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae. तीनों में भी कॉमन कैरेक्टर है अबाउट लीफ एंड दिस gynoecium पार्ट. Fruit is a legume. Let us write floral formula जो नीट में पूछ सकते हैं आपको. These are the key character. Which is the most key character, important key character? Corolla is vexillary estivation. Androecium is 9 plus 1, that is diadelphous condition. अभी यहाँ पर floral formula लिखेंगे. How about the sexes? You have both male and female sex organs, so it is bisexual, right? How about symmetry?
I had drawn this, right? One large standard petal, two wing petals, and two keel petal. There's only one axis which can divide leaf into two equal halves. एक ही axis है जो divide कर सकता है. And since एक ही axis है, तो we call it as zygomorphic. I'll give percentage sign for it. Calyx की बात करो, there are 5 sepals which can be fused in some members, free in some members. हम लोग fuse ही लेते हैं, चलो. But corolla की बात करो, what is character of corolla? One standard petal, two wing petals, plus two keel petal, and keel petals are fused, right? This is the nature which will make it unique. Andration की बात करो, what is andration condition? 9 anthers are together and one is free. What do you call this? Diadelphous. Gynation की बात करो, how many carpels are there? 1. And superior ovary. Guys, clear cut difference है ना between Solanaceae and Fabaceae. What is the difference here? K5, C5, A5. Number 5 was been repeated, but here the same number 5 has been split. अगर Fabaceae का character आपको पता करना है, तो focus on this corolla and andration. ऐसा वाला character किसी और family में आपको नहीं मिलेगा. It's exclusively present only in this member. ठीक है? Have you written this? Shall I erase it? Next, we'll talk about the next family. Page number 78 में इतने साल से they had kept one family hidden. Family का नाम है Brassicaceae, commonly known as mustard family, also known as cruciferae. इतने साल से hidden था, but this year they have exposed it. They have clearly said they will ask question from it. Okay. तो next family को explore करते हैं. Liliaceae एक family थी which has been deleted, but now we are talking about Brassicaceae family. Page number 78 of your textbook. एक floral formula है semi technical description के पास, as well as floral diagram. ये जो floral formula and floral diagram में है, this is of a family called as Brassicaceae, commonly known as cruciferae. Why do you call it as cruciferae? आपको अगर if you will have good general knowledge, crucifixion is like hanging of Jesus on a cross, right? क्रॉस की शक्ल में ये फ्लावर नजर आता है, जिसकी वजह से we call it as cruciferae. And the third name is mustard family. शाहरुख खान सरसों की खेतों में खड़कर जो है डीडीएलजे में he is what is he singing a song और कुछ गिटार में जो है बजा रहे हैं, तो that particular scene सरसों की खेत का है, and सरसों is nothing but mustard. मस्टर्ड फैमिली में की कैरेक्टर क्या है? गाइस, ज्यादा की कैरेक्टर्स नहीं है अपने पास. फर्स्टली आई टोल्ड यू इट इज लाइक प्लस साइन वाला कैरेक्टर, क्रूसीफरे वाला कैरेक्टर, बट मोर इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर इज एक्चुअली देयर इन एंड्रेशन. अगर आप टेक्स्ट बुक को केयरफुली पढ़ें, वो जो एंड्रेशम पार्ट है उसका लास्ट लाइन चेक करो बेटा. You people can open up page number 77 of textbook, 76 or 77. वहां पर andration part के बारे में जिक्र है. Okay, check out the last 2 lines of the andration. वहां पर एक chore statement है. They say based on the length of the filament, there are 2 type of plants that are being observed. One is mustard, another one is salvia. ये chore statement था, hidden statement था इतने सालों से. ठीक है, and we always used to explore it. But right now, since this family has been given, mustard के बारे में वहां पर जिक्र है based on the length of filament. 2 filaments are very dwarf, 4 of them are tall. 4 लंबे हैं और 2 गिड्डे वाले हैं. तो इस कंडीशन को we call tetra dynamis. Tetra dynamis. What is tetra dynamis? Condition where 4 of them are tall, 2 of them are dwarf. Second one is salvia. उसको बुलाते हैं डाइडाइनमस, wherein 2 of them are tall and 2 of them are dwarf. 2 वाले गिड्डे हैं and 2 वाले लंबे हैं. That is डाइडाइनमस. 4 लंबे and 2 short, टेट्रा डाइनमस. तो ये जो टेट्रा डाइनमस वाला कैरेक्टर है, this is key character for us for Brassicaceae family. किसी और मेंबर में ये वाला कैरेक्टर नहीं मिलता. पेज नंबर 78 में if you see floral diagram, 2 anthers को बाहर रखे हैं, 4 anthers को अंदर रखे हैं. बटरफ्लाई लाइक ग्रे कलर स्ट्रक्चर्स.
तो जो बाहर है दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट यू से टू आंसर्स व्हिच आर ऑफ वन हाइट, जो एक सर्कल में है दे आर रिप्रेजेंटिंग अनदर वन. तो की कैरेक्टर ऑफ ब्रासिकेसी एज आई सेड इज टेट्रा डायनामिस. गाइनेशन की बात करो, इट इज सेम बाइकार्पलरी सिंकार्पस कंडीशन सुपीरियर ओवरी. So that is not at all a key character. Fruit is a follicle. Fruit is a follicle. Whereas in Solanaceae, fruit was berry or a capsule. And in what do you say, Fabaceae that we wrote, fruit was a legume. यहाँ पर fruit is a follicle. ठीक है? Floral formula लिखते हैं so that we differentiate. Literally you have to differentiate. देखिए, if I talk about this flower, it is cruciferous. Plus sign बताया तो obviously it is actinomorphic flower. Sexes की बात करो, we have both androecium and gynoecium being present in them. तो circle with a plus sign and an arrow mark. Then calyx की बात करो, दो सेपल बाहर हैं और दो सेपल अंदर हैं. You see that diagram while I am explaining, तब भी समझ में आएगा. मैं इमेजिन कर रहा हूं, that is why it is easy for me to write it on board. आप लोग उसे देखते रहिए and then comparatively कंपेयर करते करते बढ़िए. Corolla की बात करो, चार सेपल्स हैं and all of them are in one oral. Androecium की बात करो, what was the condition? Tetradynamis, 2 plus 4. ठीक है. Gynoecium की बात करो, superior ovary, bicarpellary, syncarpus. Don't you think there is a difference between all the three families floral formula? पहला वाला Solanaceae, I said 5 number is being repeated. दूसरा वाला I said Corolla में 1 plus 2 plus 2, Androecium में 9 plus 1. तीसरे वाले में देखिए 2 का टेबल रिपीट कर रहे हैं हम लोग, 2 plus 2 4, again 2 plus 4, again 2. When there is more 2s, that is Brassicaceae. किसी और में नंबर 2 को रिपीट इतना नहीं किया गया. That is unique feature. Point to be noted itself. ठीक है. तो Brassicaceae के मामले this is the character. Okay. Next. See, they talk about Brassicaceae, they talk about what is it, Solanaceae, Fabaceae. They have also introduced Leguminaceae. Leguminaceae का जो हमने character लिखा था in Fabaceae, copied on the same thing. Pulvinous leaf base and the pinnately compound leaf, then trium वाला character. Apart from this, imbricate estivation आएगा अपनी Leguminaceae में. Imbricate estivation add कर लें. When you talk about floral formula of Leguminaceae, see, all the flowers are zygomorphic. Percentage sign आएगा. Then they are bisexual. Followed by this, we have calyx, which will have 5 sepals. Could be fused, could be free. I'll keep it free because maximum जो है Leguminaceae में free होते हैं. Corolla की बात करो, तो you have 5 petals in imbricate estivation. Imbricate को कैसे represent करेंगे? 1 plus 1. One sepal, one petal is in, one petal is out, 1 plus 1, and 3 of them are in and out like twisted. Androecium की बात करो, 10 stamens are there. Gynoecium की बात करो, monocarpellary superior ovary. This is the so-called floral formula of Leguminaceae. Difference तो है, ऐसा 8, 10 and 1 plus 1 plus 3 किसी और जगह हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ Leguminaceae में स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है. Hopefully you are understanding. Follow भी कर रहे हो. ठीक है. Then to talk about Cucurbitaceae. Okay. Name itself is telling you the example. Cucurbitaceae, cucumber, watermelon, muskmelon, bitter gourd, pumpkin, grapes. ये सारे के सारे they belong to Cucurbitaceae. You know what? Textbook में कहाँ इसको explore किया गया है. Let us try to focus on key character. सबसे पहली बात है, this plant is monoecious. Monoecious is presence of both male and female sexes on the same plant, but this is monosexual, monoecious unisexual. ठीक है. Monoecious unisexual flower. Unisexual male flower separate है, unisexual female flower separate है. Two different type of flowers. In Neet exam, then they give you 2 different floral formulas. ये सिर्फ 2 ही families में हो सकता है, एक Asteraceae में, एक Cucurbitaceae में. 2 floral formula किसी और members में नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ in these families they specified. Okay, let us try to explore the character of this. See, अगर male part की बात करें, तो male flower will have synandrous condition.
व्हाट इज साइनैंड्रस कंडीशन? आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 76 में अंडर एंड्रेशन पार्ट दे टॉक अबाउट एडल्फी. एडल्फी मतलब क्या? कंडीशन वेयर फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड, anthers are free from top. सही है? This is known as adelphi. Hopefully you have studied it. Filaments are fused, anthers are free. Adelphi. अगर anthers are fused, filaments are free, syngenesious अपने sunflower में मिलेगा. But what is synandrous? Both anthers and filaments are fused together. You cannot differentiate between anther and filament. सब मिलके एक जंग बन जाएगा. That is known as synandrous condition, which is key point of so-called अपना मेल फ्लावर ऑफ कुकुरबिटेसी. फीमेल फ्लावर की बात करो, व्हाट इज अ की कैरेक्टर इन फीमेल फ्लावर? इट इज इंफीरियर ओवरी एंड ऑल मेंबर्स विल हैव पैराइटल प्लेसेंटेशन. अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आए तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज when we started you said you have studied that terminologies very well of the previous part. That is why I'm just writing it. ना समझ आए तो I'll explain those terminologies also. You can, what you say, in between unmute your mic and ask me the question, okay? So parietal placentation and inferior ovary, these two characters will be unique or specific to so-called cucurbitaceae members. ठीक है? तो यहाँ पर cucurbites की बात होती है. ठीक है? Followed by this you have Aceraceae family. जिसे कॉम्पोजिटे भी कहा जाता है. They say that this is the most advanced family of entire dicots. सारे डाइकॉट में सबसे एडवांस फैमिली. And you know what is example of this? Is sunflower. Sunflower as well as chrysanthemum species. Chrysanthemum species आपने कहाँ देखे हैं? मैरिज फंक्शंस में स्टेज को सनफ्लावर जैसे फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं ना. Flower bouquets as well as stages are decorated by sunflower like flower, different color ones. That is chrysanthemum. Chrysanthemum species and sunflower. So are the example of this chrysanthemum. CHR. Chrysanthemum. Okay. इनकी खासियत क्या है? The very first key point is composite. क्यों बुला रहे हैं? It is cluster of many flowers. बहुत ज्यादा flowers एक साथ मिलकर हैं. Like sunflower में देखो तो there are two type of flower. One is ray floret, the one which are radiating out like this, and second one is center में अगर आप देखो there are number of flowers. जो सेंटर में हम लोग छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, each thing is one flower. It is cluster of flower. So there are two type of flower. One is ray floret and second one is disc floret. इन दो कैरेक्टर्स को मिला दो, दिस इज द की कैरेक्टर ऑफ सो कॉल्ड Aceraceae. इवन हियर वी गेट इंफीरियर ओवरी. एंड नेक्स्ट की कैरेक्टर इज एंड्रेशन की बात करो तो वी हैव syngenesious anther. व्हाट इज syngenesious anther? वी जस्ट सेड कंडीशन वेयर anthers आर फ्यूज्ड. जैसे तरावी की नमाज में आप लोग सब मिलके खड़ रहे हैं कंधे से कंधा मिला के. ठीक है? तो यू आर literally making sure that shoulders are united but your legs are apart, your legs are free. Condition where anthers are fused but filaments are free, this is known as syngenesious anther. Hopefully you are understanding. ठीक है? Each family का key character separately दे रहा हूं so that there is no confusion happening over here. ठीक है? And erase this now. And I should take photograph of this. One minute. As I said, जो मैंने लिखा था, all those are key characters. Key characters पर focus करिए आप in NEET exam. No need to by heart every character over there. And examples तो we cannot help. You have to by heart it. ठीक है? हर family में कौन सा example आता है? You have to by heart with their economic importance. ठीक है? Yeah, guys, please tell me. Which topic? Which topic? I have one more class. I'll take class only till 3:20. जल्दी बोलिए. Sir, Yeah. Liliaceae family is not there. Liliaceae is not there. It is deleted now. Instead, Graminaceae को add किया गया है. And the key character of Graminaceae is trimerous flower. Everything will be in multiples of 3 और perianth का जिक्र होगा वहां पर. किसी और मेंबर में perianth, हर जगह calyx, corolla represent करेंगे.
अगर पेरियांथ दिखा दिया जाए तो दैट इज ग्रामिनेसी फैमिली, दैट इज पोएसी आल्सो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवेसी फैमिली भी तो ऐड हुआ है ना। एग्जैक्टली, तो मालवेसी की बात करें, आई वांटेड यू पीपल टू टॉक। मालवेसी गाइस, व्हाट इज द की कैरेक्टर ऑफ मालवेसी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस फ्लावर को। हाइबिस्कस इज अ मेंबर ऑफ दिस राइट, इसका एग्जांपल है हाइबिस्कस, और we also eat one member of hibiscus, sorry, malvaceae रेगुलरली, दैट इज भिंडी, ओकरा। ठीक है, हम लोग भिंडी की बात करें तो रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं। की कैरेक्टर क्या होगा हाइबिस्कस और भिंडी वाले फ्लावर में या प्लांट में? सी, भिंडी से एक जेल निकलता है नहीं, दैट इज अ की कैरेक्टर। सेक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज, secretion of mucilage, this is first की कैरेक्टर। लेकिन टैक्सोनॉमी में फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाती है, तो लेट अस चेक द फ्लोरल कैरेक्टर। गाइस, लीफ में डू आई हैव एनी कैरेक्टर? नहीं, ऑल्टरनेट लीफ है, सिंपल लीफ है, उसका मुझे क्या भी उतना कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आई टॉक अबाउट केलिक्स, डू आई हैव एनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन केलिक्स? यस, इन केस ऑफ हाइबिस्कस वी हैव एपिकेलिक्स। व्हाट इज एपिकेलिक्स? अपना बेल शेप जो केलिक्स है ना, ऐसा, इस पर छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ग्रो होते हैं इन हाइबिस्कस, दिस इज नोन एज एपिकेलिक्स, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हाइबिस्कस। सॉरी, या नेक्स्ट, केलिक्स के बाद बात करो, करोला में डू वी हैव एनी कैरेक्टर? ट्विस्टेड ईस्टिवेशन है, दैट वुड नॉट बी अ की कैरेक्टर। बट अंदर अगर हम जाएं, एंड्रेशम की बात करें, Andresham में we do have a key character which has been specified under what is so called page number 76. क्या है कैरेक्टर Andresham का? It is monodelphous. What is monodelphous condition? Monodelphous means all filament fused to form one bundle. Anthers are free on top. Draw करके दिखाओ, देखिए ये अपना hibiscus का Andresham part है। All filaments are fused and they form a tube-like structure, and anthers are free on top like this. Yellow color anthers आपको नजर आते हैं। This type of condition where anthers are free and filament is fused is known as adelphi. और कितने बंडल बना रहे हैं ये लोग? One bundle. So that is why it is known as monoadelphous condition. This is a key character, box में डाल रहा हूं मैं आपको। स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन मालवेसी ओनली, तेरी अदा सबसे जुदा, इसकी अदा में क्या है? मोनोडेल्फिस। गाइनेशियम की बात करो, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट गाइनेशियम ऑफ हाइबिस्कस? 12th के सिलेबस में एज वेल एज 11th के सिलेबस में इसको एक्सप्लोर किया गया, प्लस प्रैक्टिकल्स में भी एक्सप्लोर किया गया। दैट इज व्हाई गाइनेशियम को भी थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जहां पर गाइनेशियम की बात होती है, दे हैव गिवन इमेज ऑफ हाइबिस्कस, ऐसा वाला इमेज है आपके पास। एक रेडियम कलर का ओवरी है, दे शो अ स्टाइल एंड ऑन टॉप दे शो 5 बाइफरकेशंस ऑफ स्टिग्मा। तो फर्स्ट की कैरेक्टर इज इट इज पेंटाकार्पलरी फ्लावर, pentacarpellary, 5 carpels are present in them, followed by this. How many what is placentation being found in it? Axile placentation. How many ovules in each ovary? हर ओवरी के चेंबर में दो दो ओव्यूल्स मिल रहे हैं। अगर क्रॉस सेक्शन लेके बताऊं आपको तो इट इज लाइक दिस, 1 2 3 4 and 5, 5 चेंबर्स हैं पेंटालोक्युलर। हर चेंबर में दो दो ओव्यूल्स मिलेंगे अपने को। We get 2 ovules in each so-called cross section. हर चेंबर में 2 ओव्यूल, followed by this axial placentation, pentalocular, syncarpus and superior ovary. Syncarpus, superior ovary. Floral formula लिख के देखेंगे इसका। See, if I take hibiscus flower and try to cut it, any plane passing through center will give me 2 equal halves. So it is actinomorphic flower. कितने सेक्सेस हैं? मेल एंड फीमेल दोनों भी मौजूद हैं, तो इट इज बाइसेक्सुअल। केलिक्स की बात करो, 5 सेपल्स आता है,
सिंकार्पस 100% ट्यूब लाइक कंडीशन मिलेगा, सिंकार्पस रहेगा। कोरोला की बात करो, 5 पेटल्स आर देयर, ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट है, तो लाइटली नीचे से फ्यूज है, बट वी आर नॉट शोइंग फ्यूजन। एंड्रेशियम की बात करो, व्हाट इज द कैरेक्टर? मोनोडेल्फस, इंफिनिटी का सिंबल डालो इन ब्रैकेट। गाइनेशियम की बात करो, हाउ मेनी कार्पल्स आर देयर? 5 कार्पल्स, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी। इसको और अपने सोलनेसी को कंपेयर करते हैं, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सोलनेसी में केलिक्स 5, करोला 5, एंड्रेशियम वाज आल्सो 5। यहां पर केलिक्स 5, करोला 5 दो कॉमन मिल रहे हैं, बट एंड्रेशियम इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसको हम लोग पकड़ के चलेंगे दैट दिस इज द की कैरेक्टर जो एग्जाम में हमें काम आने वाला है। गाइस, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस। पूरा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, की कैरेक्टर पर फोकस कर दीजिए। जैसा फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन केलिक्स करोला, डायरेक्टली की पॉइंट पर फोकस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो मालवेसी इज ऑन बोर्ड। नेक्स्ट बताइए, व्हिच फैमिली यू वांट और व्हिच व्हाट इज द टॉपिक यू वांट? द एक्चुअली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस मतलब बनते नहीं है ज्यादा, उसका अच्छे से कर लो, लेकिन क्वेश्चंस जब बनाने बैठो ना तो उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो लैंग्वेज होता है ना, वो समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसको कैसे ये करें? एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें समझ नहीं आता कितने सारे क्वेश्चंस, तो उसको कैसे करें? फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अब तक ओके। इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए। बट थोड़ा हाँ। आपको दिक्कत कहां होती है? मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वहां पर, उनमें यस दिक्कत सर। होती है। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर दोस मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ओके। I'll do this and I'll stop because I have to rush to another place for class. Again, we will have botany session. We will announce it in zoology session. Okay. तो वहां पर अनाउंस करेंगे आपको। केमिस्ट्री का भी एक सेशन हम लोग फिक्स करने वाले हैं, फिजिक्स का भी ऐसे ही फिक्स करेंगे। कंप्लीट डाउट क्लैरिफिकेशन को हम लोग विल ट्राई टू व्हाट यू से सेट इट आउट। ओके, देखिए, मॉलिक्यूलर बेसिस में मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं इन द पार्ट वेयर दे टॉक अबाउट चारगाफ रूल, एक वहां पर आते हैं। सेकेंडली आपको क्वेश्चन आएंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल में। थर्डली आपको क्वेश्चन आएंगे अपने मिसल्सन एंड स्टार सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में, मैथमेटिकल क्वेश्चंस की बात करो तो। पहला मैथमेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन चारगाफ रूल, दे आस्क यू कंसंट्रेशन ऑफ adenine is say so and so percent. I'll take a random value 18%. ठीक है, concentration of adenine is 18%. Then ask you to identify concentration of cytosine. cytosine का कितना concentration है? यहां पे whenever they ask percentage based question, what you need to do is apply Chargaff rule. What is Chargaff rule? Sum of purine is equal to sum of pyrimidine. ठीक है, सम ऑफ प्यूरिन की बात करो, व्हाट इज प्यूरिन? अडेनाइन एंड गुआनाइन, सम बोले तो प्लस, इज इक्वल टू सम ऑफ पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में कौन है डीएनए में? थाइमिन एंड साइटोसिन, सम बोले तो प्लस, तो A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव जस्ट स्पेसिफाइड अडेनाइन। अडेनाइन कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? 18%। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अडेनाइन इज 18%, वी आल्सो नो दैट A always pairs with T, G always pairs with C. अगर concentration of adenine is 18%, concentration of thymine is also 18%. तो 18 plus 18 कितना होगा बेटा? You people answer. 36. 36. ठीक है, 36 is concentration of what? Adenine plus thymine. Minus 100 करो इसको। Why? Because total concentration of DNA is 100. अगर minus 100 करो तो कितना आएगा? 64. 64. 64 is concentration of what? Guanine plus cytosine. तो divided by 2, that is कितना? 32. 32. तो 32% is concentration of cytosine, 32% is concentration of guanine. Did you understand this? This is first mathematical based question, जो अपने चारगाफ रूल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के पास जहां पर चारगाफ रूल की बात होती है वहां पर आएगा। थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग परसेंटेज, दे कैन आस्क यू डायरेक्टली द सो कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। कैसे? They'll say in 8 coils of DNA,
in 8 coils of DNA, concentration of adenine is around, say, एक number, random number बोलिए आप ही, which should be less than 50. Hello. बोलिए. 44%. 7. 44. 44. 44 is the concentration of adenine. Okay, this is a question. In 8 coils of DNA, 44 are adenine. How many of them are cytosine? यहां पर we will not apply Chargaff rule. Point to be noted. क्यों? 8 coils means what? 8 rounds. एक coil में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पर है बेटा? DNA का जो कर्व है ना, in one complete turn, how many nucleotides are there? 10 nucleotides. Okay. ठीक है? Hopefully you remember this. Draw करके बताऊं आपको DNA. This is our DNA, okay? तो एक turn is from here to here, okay? The length between this is 3.4 nanometer, right? तो यहां पर एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पर है? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पर है. तो 8 कॉइल्स बोले तो टोटली हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? 80. आउट ऑफ 80, 44 ऑफ देम आर adenine. तो डायरेक्टली माइनस करिए. यहां पर परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है. You don't have to apply this Chargaff rule over here. Directly minus 80 करो. What will be the answer? 80 minus 44 is 56. 56. Sorry, no. It's 36. 36. 36 is the concentration of cytosine. Direct. Cytosine. ठीक है? Okay. अच्छा, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बेसिस पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. न्यूक्लियोसोम मॉडल में they'll give you numbers. Say approximately 204 nanometer of DNA is there. 204 nanometer का DNA. ठीक है? In that DNA, they say concentration of adenine is approximately 223 in number. Concentration of adenine is 223, और say I'll take normal value. थोड़ा difficult हो जाएगा ये, आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी ही इस सब में. 225 ले रहा हूं instead of 223. ठीक है? तो 225 adenine molecule है. They'll ask you to find out the concentration of cytosine और guanine. यहां पर कैसा करें? पहला स्टेप है 204 नैनोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स कितना है बेटा? वन कंप्लीट टर्न इज 3.34. हाँ, तो यहां पर आता है 0.34. व्हाट यू नीड टू डू इज 204 को 0.34 से डिवाइड करें. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? check in calculator. Let me know first. 204 divided by 0.34. इतना टाइम मत लीजिए बेटा, कैलकुलेटर उठाइए, करिए ना प्लीज. सॉरी, 600 आएगा ना? हाँ वही 600. 600. हाँ, 600 आया. You know what is this? This is the total number of nucleotides in the DNA, which is measuring about 204 4 nanometer. तो 600 न्यूक्लियोटाइड्स में अपना adenine कितना है? -225. adenine is 225. -225 करिए, that is the answer. cytosine का concentration मिल जाएगा. How much is the answer? cytosine is 375. 375. 375. समझे बेटा? थोड़ा इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करें, बिकॉज नीट वाले इतना लड्डू तो उठा के नहीं दे देंगे आपको आराम से खाने के लिए, और थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए they'll ask you number of hydrogen bonds found in 204 nanometer of DNA in which adenine is so much. अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करो, आई हैव शोन यू हियर. adenine और thymine के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2. एंड guanine और cytosine के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 3. What we have to do is same type of solving method. 225 adenine molecule है, मतलब it is adenine plus thymine. cytosine की बात करो तो how many of them are there? cytosine and guanine, it is 375. what we need to do is इसको into 2, इसको into 3, sum of that is the answer. दोनों को मिला दें, ठीक है? तो that will be our answer. This is very easy नहीं? कितना हो जाएगा? Around 450.
And how much will be 375 into 3? 900, 75 plus 75, 150, 1050 plus what, 25, 1075. The answer is 1000 to 1525 hydrogen bonds are there in the DNA. Okay? This is the so-called the mathematical, what is it, questions of different variety which can be asked with respect to intro. अपने DNA के intro में I told you about Michelson and Stahl experiment. Michelson and Stahl में क्या type का mathematical question आ सकता है? They can ask you about the ratio. आपकी textbook में first generation का ratio क्या मिल रहा है? 100% heavy DNA, right? Sorry, it's not 100% heavy DNA. It is 1:1. First generation के बाद after 20 minutes I get 1:1 as a ratio. Second generation after 40 minutes I get 3:1 as a ratio. ऐसा they can ask you about fourth generation. How to calculate? Simple formula add करें 2 to the power of n minus 1, where n is the generation. तो 2 to the power of 4 अगर मैं डालूं तो 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 minus 1, that is 15:1 will be the ratio. Similarly, you tell me what is the ratio of third generation? 7:1. 7:1. So they can ask you with respect to ratio. Second is with respect to minutes. Instead of asking about generation directly, वहां पे minutes दिए गए हैं. They'll tell you 120 minutes में what is the ratio. अब 20 minutes में एक generation है, तो 120 minutes divided by 6th generation. हाँ 6th generation की बात हो रही है. So you have to find out the 6th generation वाला ratio. Hopefully you understood the topic. ऐसा interact करो बेटा, how you interacted in the so-called these problems. ऐसा अगर interaction हो तो class becomes lively. So after 2 days, the day after tomorrow on 4th again we will have a session being held, okay, of zoology. So zoology को explore करेंगे, and in zoology class we'll announce when is chemistry and physics class. Hopefully the session was interactive and you liked it, and आपको इसमें फायदा पहुंचा है. Make sure in next class you bring more of your friends ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचे, okay? And I'll stop the class here. I'll take photo of this and send you in group. I'll share it with Farhan sir. Farhan sir will surely send you in group, okay? Okay? Yeah, we'll share it. Have a good day, beta. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर बॉटनी की क्लास फिर से हो सकती है क्या? प्लांट होगी ना सीजन बेटा. के टॉपिक के लिए. बेटा अभी हमने इस सेशन को शुरू, इस सिलसिले को शुरू किया है, तो फ्रॉम नाउ ऑन कंटिन्यूअस बेसिस ऑलमोस्ट टीचर्स की अवेलेबिलिटी देखकर, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लेट, तो जब जब मौका मिले तब तक जो है समझिए ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे वी विल ट्राई टू कीप क्लासेस. ठीक है, जहां Okay, sir. हो सकता है हमारी तरफ से फायदा पहुंचाएंगे. दैट इज फॉर श्योर. ओके, थैंक यू सर. वेलकम. लेकिन ये कि थोड़ा आप लोग पहले से अपने डाउट को लिख के लेके आएंगे ना, एग्जैक्ट, तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा कि मेरा ये डाउट क्लियर कर दीजिए, ये डाउट क्लियर कीजिए. तो जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम लोग हर अल्टरनेट डे, अब कल नहीं होगा क्लास, परसों होगा, फिर उसी के बाद परसों की क्लास में हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास कब है. तो बेसिकली एवरी अल्टरनेट डे विल हैव द क्लास.